with the vitamins. We have seen the lipid soluble vitamins. We have also seen the last lecture water soluble vitamins, few water soluble vitamins, and today we'll see remaining water soluble vitamins and remaining points from vitamin. And there is one more chapter known as the minerals. So today I will try to cover that is also. Are you able to see the screen properly? So we have started with the vitamin chapters, and from biochemistry we have seen the vitamins, their classification, vitamin, their classification. We have seen that. After that we have seen the lipid soluble vitamins, vitamin A, E, D, K, A, D, E, K. After that we have seen vitamin C. After that we also started with the B complex vitamins, and from that we have covered your first thymine, then we have thymine, then riboflavin, then niacin. We have seen the cofactors of riboflavin because these cofactors are important. Question आ चुका है उसके ऊपर. We have seen the nicotinic acid or niacin, vitamin B3. After that, we have seen the different cofactors for nicotine. We have seen different cofactors which are derived from nicotine. After that, we have seen the pyridoxine. There is vitamin B6. We have seen the cofactors of pyridoxine also. Now next one is nothing but the vitamin B7 known as a biotin. I hope I am audible to you clearly. Yes or no? I am audible? Okay. So next vitamin is the vitamin B7, that is a biotin. Now biotin, you can see the structure of biotin over here. So in this structure you will find two heterocycle. Okay. So first cycle is known as a thiophene and second one is known as a imidazole. So there are two heterocyclic ring over here. Remember. So heterocycle, okay, it is a heterocyclic sulfur containing monocarboxylic acid. Sulfur containing heterocyclic monocarboxylic acid, which is sulfur containing. Now it is made from a fusion of imidazole ring with the thiophene ring with the valeric acid as a side chain. तो ये जो है आपका है ना CH2 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 COOH, that is known as a valeric acid. So vitamin B7 or biotin or also known as a vitamin H, also known as a vitamin H. It is a heterocyclic sulfur containing monocarboxylic acid which is formed by fusion of your thiophene ring and imidazole ring and having side chain of valeric acid. Valeric acid side chain में रहेगा, fusion किसका होगा? Thiophene और imidazole का fusion होगा. Okay. Now what is the recommended daily allowance of this biotin? So normally 100 to 300 mg, that is required. Okay. What are the sources? So it is found in the liver, kidney, egg, milk, tomato and grains. Biochemical function of this biotin. So it acts as a coenzyme for carrying of carbon dioxide for carboxylation reaction. So biotin क्या है? It is a coenzyme for carrying carbon dioxide for carboxylation reaction. Carboxylation के ये लगता है. Okay. Now it is a coenzyme involved in the metabolic reaction like gluconeogenesis in citric acid cycle, fatty acid synthesis. So biosynthesis of fatty acid, gluconeogenesis, that is synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor. Citric acid cycle means TCA cycle or means Krebs cycle or tricarb. Okay, that is known as a Krebs-Hanlet cycle. So these are the coenzyme which is made from this biotin is required for the or it is involved in the metabolic reaction of gluconeogenesis, citric acid cycle, fatty acids. Now there are certain antagonists of biotin. So antagonist compound of biotin, desthiobiotin, desthio, desthiobiotin, then biotin sulfonic acid. So these are nothing but the antagonists. They are the antagonist of the biotin. Antagonistic compound कौन सा है? Desthiobiotin and biotin sulfonic acid. और इसका ये important है, heterocyclic sulfur containing monocarboxylic acid formed by fusion of imidazole ring and thiophene ring with the valeric acid side chain. Because क्या होता है कि विटामिन्स में हर एक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, उसके बाद में बायोलॉजिकल रोल है, बायोलॉजिकल रोल एंड पर्टिकुलरली को एंजाइम्स, बायोलॉजिकल रोल को एंजाइम्स दैट आर इम्पोर्टेंट है ना। विटामिन में वही इम्पोर्टेंट है, बायो उसका नेम, बायोकेमिकल रोल, देन उसका केमिस्ट्री एंड इसका को एंजाइम्स अगर कुछ है तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। सो इट इज अ को एंजाइम फॉर कैरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होंगे उसमें ये बायोटिन का को एंजाइम लगता है। रिमेंबर दिस thiobiotin and biotin sulfonic acid, they are known as a antagonist to the biotin. Now deficiency disease and deficiency disease of this biotin, deficiency अगर हो गया तो क्या होगा? Deficiency of biotin result in the anemia, loss of appetite, भूख बंद हो जाएगी, अभी भूख नहीं लगेगी, nausea and dermatitis, deficiency of biotin result in the anemia, आपका हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, nausea and dermatitis, inflammation of skin. Deficiency may also result in the depression, hallucination, muscle pain and dermatitis. तो ये हो गया बायोटिन। नेक्स्ट विटामिन इज नथिंग बट द विटामिन बी पायो नोन एज अ पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी पायो इज नोन एज अ पैंटोथेनिक एसिड। So you can see the structure of pantothenic acid over here. It is also known as anti-chick dermatitis factor or filtrate factor. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एंटी चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर। चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर pantothenic acid. Now it is composed of two component, that is first one is a pantanoic acid because pantothenic acid के नाम में ही रखा है pantanoic acid and beta alanine. So there is one amino acid over here, beta alanine and pantothenic acid, okay, pantanoic acid, beta alanine and pantanoic acid, beta alanine and pantanoic acid. So composed of two components, pantanoic acid and beta alanine. So that's why pantothenic acid or vitamin B5, right? So what is the biochemical function of this pantothenic acid? So biochemical function क्या है, इसका रोल क्या है ह्यूमंस में? So biochemical function, it is exerted through a coenzyme A. जो coenzyme A होता है तो उसका एक component होता है, pantothenic acid is a component of coenzyme A, and coenzyme is responsible for the acetylation. So जैसे होता है acetyl CoA और CoA, A for acetylation, right? So it is a coenzyme responsible for the metabolic integration. Also pantothenic acid serves as a carrier for acetylated or acyl groups. Sorry, acetylate नहीं है, acetyl group है. So serve as a carrier for acetyl group or acyl groups with pantothenic acid. So fusion of pantothenic acid plus your beta alanine, fusion of pantothenic acid plus beta alanine, fusion of pantothenic acid plus beta alanine. Next we'll see deficiency symptoms of this pantothenic acid. So most of the time deficiency does not occur. ये normally भी it is the daily requirement is fulfilled through a diet. So most of the time deficiency नहीं होता है इसका. But if there is deficiency, so what will happen? Burning feet syndrome. Burning feet syndrome. तो इसका याद रखना है, deficiency burning feet syndrome. Now recommended daily allowances 5 to 10 milligram per day it is required. So it is found in the eggs, liver, meat, yeast, milk. These are the good source of pantothenic acid. Milk is a good source of pantothenic acid. तो ये सब मिल्क में, एग्स में, मीट में और ईस्ट में पाया जाता है. So remember it is known as a चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है उसका. चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर दैट इज अ पेंटोथेनिक एसिड. उसका रीजन भी है इट प्रिवेंट द कुछ तो भाई एग्स का है, कुछ भी इट प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ एग्स. सो पेंटोथेनिक एसिड एंड चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर. ओके, सो रिमेंबर याद रखना है इसको. नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट विटामिन इज नथिंग बट द विटामिन B9 folic acid. Folic acid is known as a vitamin B9. बहुत ही important है ये. So this is a very important for metabolic reaction. So folic acid is now first time this folic acid was obtained from spinach. Spinach होता है आपका पालक भाजी, पालक का सब्जी, उससे ये आया था.
spinach. First time folic acid was obtained from spinach, and that's why the leaf is known as a folium in the Greek language, folium, and that's why it was obtained from leaf. That's why it is known as a folic acid first time. So vitamin B9 is a folic acid. So composed of a three component now. Here are three component. Pyridine ring is there, then para-amino benzoic acid is there, and lastly glutamic acid. So folic acid is composed of a three component. Pyridine ring, P silent होता है इसमें. Pyridine ring, para-amino benzoic acid and glutamic acid. Now active form of this folic acid is a tetrahydrofolic acid. Tetrahydrofolic acid is a active form. Now folic acid is converted into dihydrofolic acid by folic acid, okay, folate reductase by enzyme folate reductase. Folic acid का body में conversion होता है. Folic acid is converted into dihydrofolic acid by folate reductase. Folate reductase. Now dihydrofolic acid is converted into body tetrahydrofolic acid by dihydrofolate reductase. Now tetrahydrofolic acid is an active form. Okay. That is an active form. Now humans can utilize pre-formed folic acid. जो humans होता है ना, अपन जो आदमी होते हैं, तो जो already जो folic acid है, वो folic acid from food or plants, so we can utilize the folic acid, pre-formed folic acid ना. अपन वैसे भी क्या है, मौका परस्त होते हैं, तो मिल गया तो खा लेंगे, मिल गया तो ले लेंगे. But bacteria, microorganism, they cannot utilize the pre-formed folic acid. उनको अगर रेडीमेड folic acid देंगे तो वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते. So that's why microorganism they have to synthesize their own folic acid, right? They have to synthesize their folic acid from para-amino benzoic acid, PABA. Okay, and there only sulfur drugs, methotrexate, they what they do is they prevent the synthesis of folic acid in the microbial organism. Now humans can utilize pre-formed folic acid. तो ये सल्फर ड्रग अपन ले लेंगे, बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर आपका भी फॉलिक एसिड का कार्यक्रम हो जाएगा. बट वो आपका नहीं होता, क्योंकि आपको अगर सिंथेसाइज नहीं किया बॉडी ने तो भी फर्क नहीं पड़ता, बाहर से भी जो आएगा उसको यूटिलाइज कर लेगा. सो दैट्स व्हाई सो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म they cannot utilize the pre-formed folic acid. So that's why they have to synthesize their own folic acid, and that's why sulfur drugs and other drugs they selectively affect the microorganism, not the host. No, it is composed of a three component: pyridine ring, para-amino benzoic acid and glutamic acid. Active form होता है उसका tetrahydrofolic acid. Now it is formed by conversion of dihydrofolic acid by the enzyme dihydrofolate reductase. Recommended dietary allowance होता है इसका 200 microgram. It is increased in case of pregnancy. Okay, source क्या है इसका? It is found in the green leafy vegetables. Green leafy vegetable. This is spinach. That's why it was obtained from leaf. Leaf is known as a folium, and that's why it is known as a folic acid. Also present in the whole grain, cereals, liver, kidney, yeast, and eggs. It is this folic acid is known as a it is known as a it is known as a factor citroverum, leucovorin citroverum factor. This folic acid is known as a leucovorin citroverum factor. इसको एक नाम है leucovorin citroverum factor. So यहाँ पे लिखा नहीं, but you have to remember leucovorin citroverum factor. Now what is the bio? You can see the structure of folic acid here. This one is known as a pyridine ring. This one is known as a pyridine ring. Okay, this is a para-amino benzoic acid. This is known as a glutamic acid. There are three components. Okay? Tetra biochemical functions क्या है इसका? Biochemical function of your folic acid. Tetrahydrofolic acid, that is tetrahydrofolic acid is a it is act as a coenzyme. It acts as a coenzyme which is involved in the transfer of one carbon. Okay, involved in the one carbon metabolism. Tetrahydrofolic acid is a coenzyme involved in the one carbon atom metabolism. It acts as a donor and acceptor for methyl group or formyl group or acetyl group, etc. Tetrahydrofolate is also known as a folinic acid. Okay, tetrahydrofolate जो active form of folic acid is known as a folinic acid. Active form of folic acid is known as a folinic acid. That is a it is known as a leucovorin citroverum factor. क्या बोलते हैं इसको? leucovorin citroverum factor. यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ leucovorin citroverum factor, because first time it was its role was recognized
ये जो फोलिक एसिड है उसका रोल क्या है बॉडी में, है ना, वो रिकॉग्नाइज किया था बाय स्टडिंग वन ऑर्गेनिज्म। तो उसको ये बोलते हैं लिकोवेरम सिट्रोवेरम। लिकोवेरिन सिट्रोवेरम, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लिकोवेरिन सिट्रोवेरम। सो उसमें ये फर्स्ट टाइम देखा गया था कि इसका काम क्या है। सो इट वाज फर्स्ट टाइम स्टडीड, द रोल ऑफ folic acid was studied first time by taking, okay, or by studying the metabolism in the leucovorin citroverum organism, and from that time it is known as a leucovorin citroverum factor। याद रखना है। now deficiency of folic acid is there in a hyperhomocysteemia। hyperhomocysteemia, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ गया आपकी बॉडी में तो हाइपरहोमोसिस्टीमिया, उसमें फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी which is also which is also related with the coronary heart disease and atherosclerosis। it is also known as a anti-neural tube factor, okay, it is anti-neural tube factor। so folic acid is supplied, okay, it is supplied to a pregnant woman as a supplement। folic acid देखो आप कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसमें आयरन प्लस फॉलिक एसिड का टैबलेट चल होता है। why? because deficiency of folic acid in the pregnant woman, okay, deficiency of folic acid in the pregnant woman may lead to neural tube defect। deficiency of folic acid in the pregnant woman may lead to neural tube defect। neural spinal cord properly नहीं बनेगा, so spinal cord will not, deficiency of folic acid in the pregnant woman leads to neural tube defect। आपको आएगा बात। am I audible? so deficiency, disease and toxicity of folic acid। so most common vitamin deficiency that occurs with the folic acid। so सबसे ज़्यादा deficiency किसका होता है? folic acid का। so most common vitamin for deficiency। now deficiency mostly occurs in the pregnant woman, and deficiency in the pregnant woman can cause neural tube defect in the fetus, neural tube defect, and that's why every pregnant woman is having supplement of iron plus folic acid। क्योंकि अगर फॉलिक एसिड नहीं मिला तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज आल्सो ए टेराटोजेनिक इफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड का अगर हो गया तो होता है, बट इट इज अ teratogenic effect of drugs also। so due to lot of drugs neural tube defect is there। for example your sodium valproic acid, right, your carbamazepine, carbamazepine, your phenytoin, okay, no, lot of drugs are there, okay, verapamil, carbamazepine, then phenytoin, okay, neural tube defect, right, then carbamazepine, verapamil, phenytoin, then anti-cancer drugs they can develop in the spina bifida, neural tube defect, etc। tetracycline का नहीं होता और अभी याद नहीं आ रहा है। these are the few example। verapamil, sorry, ये ACE inhibitors, okay, pills, they also have neural tube defect, pills, ACE inhibitors, okay, where then sodium valproate anticonvulsant होता है, carbamazepine anticonvulsant, phenytoin, okay, so all they can cause neural tube defect as a teratogenic effect, but it is also due to deficiency of folic acid। प्रेग्नेंट वुमन में अगर फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अगेन डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड लीड्स टू माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल, सेल का साइज छोटा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, चेंजेस इन द बोन मैरो फीचर, दे आर द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। इसका एंटागोनिस्ट कौन है फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट? सो सल्फोनामाइड्स, सल्फर ड्रग्स, then trimethoprim, aminoterin and methotrexate। तो सल्फर ड्रग्स एंटीबैक्टीरियल होता है, ट्राइमेथोप्रिम एंटीबैक्टीरियल है ना, methotrexate is an anti-cancer drug। so all they are the antagonist of folic acid। so what these drugs do, they inhibit the synthesis of folic acid। sulfur drug inhibits the synthesis of folic acid in the bacteria, trimethoprim also does the same thing, but methotrexate is an anti-cancer drug, it is known as a dihydrofolate antagonist, okay, so it inhibits the folic acid synthesis in the humans also, in the cancer cell, and remember sulfur drug they inhibit the formation of synthesis of folic acid, trimethoprim inhibit, okay, sulfur drugs and trimethoprim they are combined together, you know, called trimazole, because of there is a sequential blockage of sulfur drugs inhibit the folic acid synthesis enzyme, trimethoprim inhibit the dihydrofolate reductase enzyme, and trimethoprim inhibit the dihydrofolate
reductase enzyme, ये भी वही करता है methotrexate. That's why they prevent the synthesis of folic acid. That's why bacteria will die, because folic acid is very important for one carbon chain reaction in the bacteria also, right? So structural aspect you should know. So this one is known as a pyridine ring, you know. यहाँ पे nitrogen one, pyrimidine plus pyrimidine, you know, pyrimidine plus pyrazine ring, so known as a pyridine ring. To that there is a this PABA, para-aminobenzoic acid. NH2 होगा यहाँ पे, COOH होगा, para-aminobenzoic acid, and this is known as a glutamic acid. And this pyridine ring plus PABA, अगर pyridine ring and PABA है, दोनों है, glutamic acid नहीं तो उसको बोलते हैं टेरोइक एसिड. एंड अगर ये तीनों है तो उसको बोलेंगे टेरोइल ग्लूटामिक एसिड. तीनों है तो टेरोइल ग्लूटामिक एसिड. सो फोलिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ टेरोइल ग्लूटामिक एसिड. फोलिक एसिड को टेरोइल ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं. देयर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर. सो रिगार्डिंग द methotrexate, so which is एंटी कैंसर ड्रग. ये methotrexate क्या होता है? एंटी कैंसर ड्रग होता है, राइट? सो व्हाट इट डू, इट विल ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड इन द ह्यूमंस. ओके, अपने कैंसर सेल में फोलिक एसिड का सिंथेसिस होने नहीं. नाउ इफ देयर इज टॉक्सिसिटी ऑफ methotrexate, अगर methotrexate का ओवरडोज वगैरह हो गया, एम आई ऑडिबल टू यू? अगर methotrexate का ओवरडोज हो गया, so if there is a toxicity of methotrexate to the cell, so what will happen? So there is a, okay, so cell is not able to divide, cell is not able to do its metabolism, right? So there is a toxicity to the cell, methotrexate. Now in this case the antidote is nothing but the folinic acid. जो folinic acid होता है, that is antidote. Folinic acid, folinic acid. Okay, there is a active form of folic acid. There is a tetrahydrofolic acid is known as a folinic acid. So in case of methotrexate toxicity, folinic acid is used as an antidote. Okay, and that's why use of folinic acid in case of methotrexate toxicity is known as a methotrexate rescue. Is known as a methotrexate rescue. methotrexate का टॉक्सिटी होता है बॉडी में, एंड उसका एंटीडोट होता है फोलिनिक एसिड. फोलिनिक एसिड को क्या बोलते हैं अपन? ल्यूकोवरिन सिट्रोवरम फैक्टर. ल्यूकोवरिन सिट्रोवरम फैक्टर. So that is a folinic acid rescue, methotrexate rescue. When we say anti-cancer drug, at that time I will also explain what is the role of your folic acid. You can see over here, it is involved in the transmethylation reaction. So one carbon transfer reaction, transmethylation reaction, right? यहाँ पे homocysteine is converted by homocysteine ethyl transferase, and it is converted into the methionine. It is converted into the methionine. Homocysteine is converted into methionine by homocysteine ethyl transferase, right? Now that methyl which is released, इससे जो methyl release होगा, now vitamin B12 cyanocobalamin. Cyanocobalamin takes that methyl. Cyanocobalamin is converted into the methylcobalamin. Now methyl group from this is taken, and folic acid, okay, folic acid is converted to, folic acid, tetrahydrofolic acid is converted to methyl tetrahydrofolic acid. Now methyl tetrahydrofolic acid can give methyl group only to the homocysteine. Now methionine का बाद में बनता है आपका S adenosine methionine, SAM, ठीक है. Then again by releasing the methyl group, by releasing the methyl group, it will produce S homocysteine, S adenosine homocysteine. And from this adenosine is released and you will get a homocysteine. So that's how. Okay, now whatever methyl is released over here, so that is also utilized. For example, methyl acceptor or methyl product. So the point being here, folic acid is very important for one carbon atom chain reaction, one carbon transfer chain reaction, The enzyme, okay, the active methionine SAM, this is adenosine methionine. The active methionine SAM can transfer the group to the acceptor to form methyl acceptor. If there is a deficiency of vitamin B12, अगर vitamin B12 का deficiency अगर हो गया, B12 deficiency हो गया, so tetrahydrofolic acid as a N5 methyl tetrahydrofolic acid, this is called. तो ये इसका deficiency अगर हो गया है ना,
तो ये मिथाइल ग्रुप फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज नॉट transferable if there is deficiency of vitamin B12. So that's why it is known as a folate trap. Folate trap. Not much important for you. Okay. Next we'll see. Am I audible to you? Okay. Next vitamin is the vitamin B12 known as cyanocobalamin. विटामिन B12 को क्या बोलते हैं अपन साइनोकोबालामाइन. इसके और भी डेरिवेटिव होते हैं जैसे मिथाइल कोबालामाइन. मिथाइल इसके दो डेरिवेटिव होते हैं. देयर आर टू विटामिन्स. सो मिथाइल कोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन नोन एज मेकोबालामाइन, और दूसरा और एक होता है कार्बोक्सीकोबालामाइन. ओके, अमाइनोकोबालामाइन, कार्बोक्सीकोबालामाइन. सो 2-3 विटामिन्स आते हैं. तो cyanocobalamin is known as an anti-pernicious anemia factor और anti-pernicious anemia vitamin. तो क्वेश्चन आ चुका है मोस्ट कॉमन विटामिन B12 deficiency, that is a pernicious anemia. Pernicious anemia. Most common vitamin B12 deficiency results in the pernicious anemia because it is anti-pernicious anemia vitamin or factor. Only synthesized in a microorganism, not synthesized in the animal or plant. Now ये जो विटामिन B12 होता है वो सिर्फ कौन बनाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. विटामिन B12 is only synthesized in the microorganism, not in the animals and plant. Now it has a very complex structure. It consists of a corin ring. इसमें कौन सा रिंग होता है? कोरिन रिंग with a central cobalt atom. इसमें कोबाल्ट एटम सेंट्रली प्लेस होता है. उसके बाद में साइनाइड आयन भी होता है. उसके बाद में टेट्रापायरोल, 4 पायरोल ग्रुप्स भी होते हैं. So whole that ring is known as a corin ring. Okay. Last vitamin to be discovered. It is the last vitamin which was discovered. इसके बाद में कोई विटामिन डिस्कवर नहीं हुआ. एक क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. So vitamin B12 is ऐसा क्वेश्चन था. Structurally vitamin B12 is a tetrapyrrole with the cyanide and cobalt atom placed centrally. It is a tetrapyrrole. टेट्रा मतलब 4, पायरोल मतलब पायरोल. रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है? 3 to 4 माइक्रोग्राम. सोर्सेस क्या है? लिवर में होता है, किडनी में होता है ना, मिल्क में होता है, कर्ड में होता है, एग्स, फिश, चिकन. कर्ड इज द बेस्ट सोर्स बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लैक्टोबैसिलस. कर्ड में सबसे ज्यादा साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 because it is synthesized by lactobacillus over there. It is not produced in the humans, not produced in the animals, plants. बायोकेमिकल रोल क्या है? बायोकेमिकल फंक्शन. एक क्वेश्चन और आ चुका है. देयर इज वन प्रोटीन नोन एज अ ग्लाइकोप्रोटीन, GP1, known as an intrinsic factor. This factor is present in the stomach. Stomach में होता है. So this intrinsic factor is present in the stomach, which is a glycoprotein known as GP1 protein, which is required for the absorption of vitamin B12. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? GP1. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. आई थिंक ये आपने देखा है ऑलरेडी इन द जनरल फॉर्मुलेशन. सो इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 in the stomach. Biochemically it is important for biochemically ये किसके लिए important है? Synthesis of methionine from homocysteine. इसे ऊपर वाले में देखा है आपने. Isomerization of methyl malonyl CoA to the succinyl CoA. ये किसमें होता है? It occurs in the synthesis of cholesterol. So very important enzyme, very important vitamin for synthesis of cholesterol. Anti-pernicious anemia factor होता है. So obviously deficiency क्या होगा? So deficiency results in the most common deficiency symptom of this vitamin B12 is a pernicious anemia. Now it is characterized by low hemoglobin level in the body, in the blood. So common deficiency क्या होता है? Pernicious anemia, characterized by low hemoglobin level and also neurological manifestation. Neurons को भी डैमेज होता है. So it is very important for neural skin. Deficiency is also related with the neuronal degradation. नर्व का degradation हो जाएगा if you are having vitamin B12 deficiency and demyelination of neuron. जो myelin sheath होता है न्यूरॉन का वो भी रिमूव हो जाएगा अगर deficiency है. So remember deficiency of symptoms of vitamin B12, pernicious anemia, then neurological manifestation, demyelination of neuron, neuronal degradation. Okay, you can see over here the structure of vitamin B12. Structure of vitamin B12 क्या है? Structure of vitamin B12. Right? So as I told you, it is a cobalt and cyano containing
cobalt and cyanide, cobalt and cyanide, they are placed centrally containing tetrapyrrole. tetrapyrrole का आप देखो A, ठीक है, pyrrole ring B, pyrrole ring C, pyrrole ring D क्या है, pyrrole ring. So it is a tetrapyrrole 1 2 3 4. So it is a tetrapyrrole, tetrapyrrole, tetrapyrrole. Again there is one more heterocycle in the structure of your cyanocobalamin, and that is nothing but the benzimidazole moiety. So 5,6-dimethyl benzimidazole, so that is also there in ये भी होता है, याद रखना है 5,6-dimethyl imidazole benzimidazole. Then pyrrole है ना, pyrrole ring होता है, pyrrole, tetrapyrrole, cyanide and cobalt, and these are attached by coordinate bonds. बाद में अमाइन भी रहेगा, क्योंकि इस नाम में ही क्या है उसका साइनोकोबल अमाइन, तो अमाइन तो रहेगा ना, CH2 CH2 NH2, ये अमाइन तो रहेगा उसमें. देन इसमें एक शुगर भी होता है, sugar and phosphate group. So this is the structure of your cyanocobalamin. Cyano means this, cyano is because of this cyanide ion, and coba is for this cobalt, and amine is for this amine, cyanocobalamine. So that is the structure of cyanocobalamin, vitamin B12. So it is a cobalt and cyanide containing tetrapyrrole. इसके ऊपर अभी recently GPAT में क्वेश्चन आया था. It is a tetrapyrrole 1 2 3 and 4, tetrapyrrole. Right? Are you getting or not? समझ रहा है क्या? Yes or no? Yes. Now you can see over here again. So cobalt atom which is placed centrally, and this is cyano group which is attached to a cobalt by coordinate bond. Okay, N benzimidazole substitute is also there. Benzimidazole moiety is there. Then N pyrrole substituted. So tetrapyrrole है ना, देखो यहाँ पे दो और ये दो. So it is a tetrapyrrole, simplified structure. Then one of the deficiency of this vitamin B12 is also observed in the autoimmune disease. एक autoimmune disease होता है, autoimmune disease, you know. In that what happens, there is a destruction of the intrinsic factors. Okay, so intrinsic factor in the stomach, from the stomach, then vitamin B12. Okay, so when vitamin B12 and intrinsic factor combines together, so that is transported across the cell membrane, and then it is absorbed. Normally in the autoimmune disease what happens, there is a synthesis of antibody against the intrinsic factor. इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी. तो ऑटोइम्यून डिसीज मतलब क्या, आपकी खुद की बॉडी आपके खुद के प्रोटीन को क्या करती है, योर बॉडी considers your own protein as an antigen, and against that antibodies are formed. Now when that antigen antibody will combine, there is a destruction. Okay, so antibody against the intrinsic factor, and that's why what will happen, so this antigen, okay, this intrinsic factor plus antibody against this intrinsic factor, and then vitamin B12. So antibody combines with the intrinsic factor and B12 could not combine, and that's why B12 is not absorbed, and in this vitamin B12 deficiency is there. Vitamin B12 deficiency is also because of the poor absorption, or vitamin B12 deficiency is also because of the autoimmune disease. Okay, yes or no? Are you getting or not? Okay, so again you can see over here vitamins and then chemistry, क्योंकि ये chemistry का important part था, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये 2-3 बार रिवाइज करेंगे. So vitamins and their chemistry. So पहला अपने देखा है लिपिड सॉल्युबल विटामिन ए. सो विटामिन ए कहाँ से बनता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट. कौन से 3 कंपोनेंट, पहला होता है
beta ion ring. So first component is nothing but the beta ion ring. Beta ion ring को क्या बोलते हैं अपन? Beta ion ring को ही बोलते हैं अपन trimethyl cyclohexenyl ring. That is a beta ion ring. Then उसमें isoprenide units होता है. So all trans isoprenide units known as a polyene. Okay, polyene chain with the 4 double bonds. Okay, and lastly होता है ना 4 double bonds. Beta ion ring plus isoprenide units and 4 double bonds. And lastly alcohol होता है. Okay? Now your vitamin A has a 3 vitamins. So अगर अल्कोहल है तो उसको बोलते हैं रेटिनॉल. Okay? अगर अल्डिहाइड है तो उसको बोलेंगे रेटिनॉल और आल्सो कॉल्ड एज रेटिनिन. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो बोलेंगे रेटिनोइक एसिड. नाउ विटामिन ए. सो प्रो विटामिन ए क्या होता है? व्हाट इज प्रो विटामिन ए? सो प्रो विटामिन ए इज नथिंग बट द बीटा कैरोटीन. प्रो विटामिन ए क्या होता है? बीटा कैरोटीन. Okay? So there are alpha, beta and gamma carotene. They are present in the plant known as a provitamin A. Known as a provitamin. Most common beta होता है इसलिए beta carotene. So beta carotene is a provitamin A. उसका molecular weight होता है C40H56. Now beta carotene after hydrolysis in the GIT will give you 2 molecules of vitamin A. Beta carotene का hydrolysis होने के बाद में 2 molecule मिलता है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है. याद रखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. बीटा कैरोटीन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस will give you 2 molecules of vitamin A, whereas alpha and gamma carotene after hydrolysis they will only give 1 molecule of vitamin A. बीटा कैरोटीन 2 molecule देता है, अल्फा एंड gamma carotene एक ही molecule देता है विटामिन E का. आर यू गेटिंग और नॉट? ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल होता है. ये इंफॉर्मेशन बहुत ही पिकअप करके रखा है. देन विटामिन डी. Next we have already seen this lipid solubility, but chemistry I am going to discuss again. So vitamin D, D3 जो होता है that is known as a cholecalciferol. It is found in the fish liver oil and also produced in the humans under the skin by using sunlight. Ergosterol जो होता है उसको प्रोविटामिन डी. Okay, so cholecalciferol, ergosterol जो होता है known as a provitamin D, cholecalciferol. Ergosterol is known as a provitamin D2 found in the plants. 7-dehydrocholesterol. Okay? 7-dehydrocholecalciferol. Cholesterol नहीं. 7-dehydrocholecalciferol known as a provitamin D3 found in the skin. Now structural characteristic क्या इसमें क्या है? Cyclopentanoporhydrophenanthrene है ना? OH group at C3. OH group at C3. 2 double bonds between C5, C6. C7, C8, okay, and hydrocarbon chain at a C17. स्ट्रक्चर उसको ऑलरेडी देखा है, so यहाँ पे नहीं. विटामिन ई नॉन एज अ टोकोफेरॉल है ना. ये क्या है ना 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल. 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल. दैट इज नोन एज कैल्सिट्रायोल. कैल्सिट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म. विटामिन ई मतलब क्या? It is known as tocopherol. So out of that, alpha tocopherol is the most common. It is a group of 8 vitamins in alpha, beta, gamma, delta, eta, theta वगैरह. So most common होता है alpha tocopherol. So 5,7,8 trimethyl tocol ring is there. 5,7,8 trimethyl tocol ring is there. Beta tocopherol is also there. So 5,8 dimethyl tocol. Beta tocopherol 5,8 dimethyl tocol. Gamma tocopherol जो होता है उसमें 7,8 dimethyl tocol होता है. डेल्टा में टोकोफेरॉल में 8 मिथाइल टोकोल होता है. बस आपको इतना याद रखना है. यहाँ पे अल्फा टोकोफेरॉल को मोस्ट कॉमन होता है. 5,7,8 ट्राइमिथाइल टोकोल रिंग इज देयर. नेक्स्ट इज विटामिन के. सो ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ नेप्थाकिनोन डेरिवेटिव. ऑल फॉर्म्स ऑफ विटामिन के, K1, K2, K3. ओके, ये सब क्या है? दे आर हैविंग नेप्थाकिनोन रिंग इन द स्ट्रक्चर. क्वेश्चन आ चुका है इसके लिए. नेप्थाकिनोन. ओके, and it is the only vitamin which is synthesized in the GIT. कि कुछ up to lesser extent B complex vitamin भी बनते हैं, but it is the only vitamin which is synthesized in the GIT. All are the forms of naphthaquinone derivative. Now K1 is known as a phytoquinone found in the plants. K2 is known as a menaquinone and K3 is known as a menadione. K3 is known as a menadione. So out of that K1, K2 they are the lipid soluble, है ना. और K3 जो सिंथेटिक वाला आता है वो वाटर सोल्यूबल होता है. वाटर सोल्यूबल. आर यू गेटिंग और नॉट? नाउ नेक्स्ट इज विटामिन B1.
वाटर soluble विटामिन चल रहा है. So thiamine containing, okay, thiamine, it is not thiamine. It contains pyrimidine ring and thiazole ring. Pyrimidine ring and thiazole ring, they are connected by methylene bridge. It is the only sulfur containing vitamin. Sulfur containing vitamin, naturally occurring sulfur containing vitamin. विटामिन बी टू बोलते हैं अपन उसको राइबोफ्लेविन. इसमें कौन सा रिंग होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. आइसो एलोक्सिजिन. इट इज ऑरेंज येलो कलर्ड कंपाउंड कंटेनिंग राइबोज अल्कोहल नोन एज रिबिटॉल. इसमें राइबोज अल्कोहल होता है रिबिटॉल है ना. राइबोज का ही रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है, रिबिटॉल. रिबिटॉल एंड आइसोएलोक्सिन इट्रोसाइकिल, दैट इज आल्सो नोन एज अ फ्लेविन न्यूक्लियस. इसको फ्लेविन न्यूक्लियस बोलते हैं. दे आर जॉइंड टुगेदर बाय 19, वही 19 पोजीशन एट कार्बन. Now vitamin B3, इसको तो सिंपल है. It is a nicotinic acid derivative pyridine 3 carboxylic acid. That is a, its IUPAC name is only there. Pyridine 3 carboxylic acid. It occurs in the form of amide. Okay, it can occur in the form of amide known as a nicotinoid. Vitamin B6 मतलब क्या, pyridoxine. Pyridoxine, okay, pyridoxine, or it also known as a adermine. Adermine भी बोलते हैं उसको. Chemically it is a 2-methyl 3-hydroxy 4,5 di hydroxymethylpyridine. 2-methyl 3-hydroxy 4,5 di hydroxymethylpyridine. उनसे विटामिन B6 pyridoxine. विटामिन B9 अपन उसको बोलते हैं फोलिक एसिड. उसमें देखा है अपन आज, देयर आर 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट इज टेरिडीन न्यूक्लियस. तो वो टेरिडीन न्यूक्लियस कैसे बनता है, pyrimidine रिंग प्लस पायरेजिन रिंग है ना. सो दो रिंग होता है उसका बना के टेरिडीन रिंग होता है. देन दूसरा कंपाउंड होता है उसका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पापा. थर्ड कंपाउंड होता है ग्लूटामिक एसिड. दे आर, इट इज केमिकली कॉल्ड एज टेरोइल ग्लूटामिक एसिड. और also इसका एक्टिव फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, राइट. एंड दैट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोवेरिन सिट्रोवेरम फैक्टर और फोलिक एसिड व्हिच इज एंटीडोट फॉर मिथोटॉक्सिक पॉइजनिंग. विटामिन B7 जो है उसको बोलते हैं अपन बायोटिन. इट्स अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सल्फर कंटेनिंग वाटर सॉल्युबल विटामिन, राइट. इसमें दो रिंग होता है, वी हैव सीन थाइजोल रिंग, थायोपिन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग. सो यहाँ पे थायोपिन रिंग होता है एंड इमिडाजोल रिंग होता है. ये भी ऐड करने पड़ेगा इसमें. आई विल ऐड थायोजोल रिंग, सॉरी, थायोपिन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग, दे आर joined together, okay, and only sulfur containing ये विटामिन, ओके. देन कुछ विटामिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं आपके. सो वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. उसको कंपाइल करता हूँ मैं. तो उसमें कहिए कि यहाँ पे है ऑलरेडी एक दो. लिपोइक एसिड. लिपोइक एसिड, सो थायोएक्टिक एसिड सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड होता है. ये सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड 6,8 डाइथायो ऑक्टेडेकोनिक एसिड. 6,8 डाइथायो ऑक्टेडेकोनिक एसिड. 6,8 पोजीशन पे दो सल्फर है, डाइथायो ऑक्टेडेकोनिक एसिड. मतलब डेकोनिक मतलब दा एंड ऑक्टे मतलब 8. सो 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड with the sulfur known as a lipoic acid. Okay, so alpha lipoic acid और thiouretic acid 8 carbon and 2 sulfur. इसका रोल भी अपन देखेंगे कल. lipoic acid. Vitamin C, it is a ascorbic acid and it is a enediol lactone. Strong acid, it is a strong acid because of the dissociation of enolic OH at C2, enolic hydrogen at C2 and C3. It has a strong reducing property. यहाँ पे reading होगा. The strong reducing property, and it is also okay because of this acidic nature. It has a strong reducing property, and because of this it is used as an antioxidant. Okay, L ascorbic acid is an active form. दो होता है इसका D and L. L ascorbic acid क्या है, एक्टिव फॉर्म है. L ascorbic acid क्या है, एक्टिव फॉर्म है. और लास्ट में साइनोकोबालामाइन. So it contains corin ring. क्वेश्चन आता है corin ring, that is a, okay, that is 4 reduced and extensively substituted pyrrole ring. क्या है देखो, 4 pyrrole ring. क्वेश्चन आ चुका है, टेट्रा pyrrole है. The central portion of molecule surrounding a single cobalt atom just below the corin ring 0.6 dimethyl benzimidazole riboside is connected by one end to the cobalt and by another end to the riboside to the ring D of corin ring. Cyanide group is bound to a cobalt atom by coordinate bond. That's why sometimes it is called as a, that's why it is cyanocobalamin. इसमें cyanide है
कोबाल्ट है, अमाइन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है. That's why cyanocobalamine. Originally isolated form is known as cyanocobalamine. But if cyanide group is absent, अगर वो cyanide group absent है उसमें, it is known as a cobalamine. If cyanide group is absent, then it is known as a cobalamine. Cyanide group is present, it is known as cyanocobalamine. If cyanide group is absent, known as a cobalamine, and if cyanide group is present, known as cyanocobalamine. Right? याद रखना ही है. Cobalamine occurs in the natural material. Okay. Next आता है आपका vitamers. Vitamers मतलब क्या है? Vitamers of B12. If cyanide group is replaced by OH group, it will become hydroxycobalamine. Cyanide group अगर OH group से replace किया तो hydroxycobalamine बनेगा. अगर नाइट्रो से replace किया तो नाइट्रोकोबालामाइन बनेगा. हाइड्रोक्सीकोबालामाइन को बोलते हैं विटामिन B12A. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So hydroxycobalamine is known as a vitamin B12A. Nitrocobalamine known as a vitamin B12C. Then chlorocobalamine. Then sulfocobalamine. याद रखना है. Are you getting or not? दूसरा कंपाउंड होता है जैसे अपने देखा लेपोइक एसिड, उसी तरीके से कंपाउंड होता है इनोसिटॉल. सो ओके, mesoinositol or myoinositol is a hexaheterocyclohexane also known as a muscle sugar. तो इनोसिटॉल को बोलते हैं मायोइनोसिटॉल और मसल शुगर. ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके रोल अपन बाद में देखेंगे. नाउ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ एंटीविटामिन्स एंड विटामिन एंटागोनिस्ट. सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ एंटीविटामिन्स एंड विटामिन एंटागोनिस्ट. ठीक है, तो विटामिन एंटागोनिस्ट कौन है और विटामिन क्या है? तो विटामिन के का एंटागोनिस्ट कौन है भाई? अपन ने देखा है कोगुलेंट, डाइकामेरोल एंड वारफेरिन. दे आर द विटामिन के एंटागोनिस्ट. थायमिन का एंटागोनिस्ट कौन है? अपन देखा है थायमिनेज, पायरीथायमिन, ऑक्सीथायमिन, थायमिन सल्फोनिक एसिड. कार्बोफ्लेविन का एंटागोनिस्ट कौन है? गैलेक्टोफ्लेविन. विटामिन B3 नियासिन का एंटागोनिस्ट कौन है? आइसोनियाजाइड एंड डीऑक्सीपिरिडोक्सिन. बायोटीन का B7 का विटामिन का एंटागोनिस्ट कौन है? एविडिन एंड डेसथायोबायोटीन. फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट कौन है? आपको मालूम है अच्छे से, ट्राइमिथोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट, अमोनोटेरिन. सल्फोनामाइड्स भी है, but they are not true antagonists. True antagonists are trimethoprim and methotrexate because they are the dihydrofolate reductase inhibitor. Sulfatase, they are folic acid synthase inhibitor. Para-aminobenzoic acid is also sometimes considered as a vitamin, and its antagonist is nothing but the sulfonamide.